Hello everyone, welcome to the Diligent Learners. In this video, we'll be covering all the economy related current affairs for the month of December 2025 for the upcoming Cbse Direct Recruitment Quota Examination 2026. So, the first topic which we are taking up is the Finance Ministry has recently unveiled a new logo for regional rural banks to signify a single and unified brand identity. ठीक है और हमने अभी कुछ थोड़े in one of the previous videos we had read that there are nearly 43 regional rural banks in our country and a step is being taken to ensure one state one regional rural bank का policy इसको भी implement कर रहे हैं. So the number of regional rural banks will be reduced to 28 from 43. ठीक है and this is a new logo which has been unveiled in order to signify a single brand identity. Next, consumer complaints under the Ombudsman scheme of RBI rose by 13% in the financial year 25. So, a senior RBI official appointed to provide a free, fast way for customers to resolve complaints has देखिए इसमें क्या हुआ है ये ओम्बड्समैन का डेफिनेशन दिया हुआ है. देखिए ओम्बड्समैन क्या होता है? इट इज़ बेसिकली अ सीनियर official who has been appointed to resolve complaints of various जो भी किसी भी कस्टमर्स को कंप्लेंट्स कस्टमर्स या तो जो रिटेल कस्टमर है उनको कोई कंप्लेंट है या फिर कोई कंपनीज को कंप्लेंट्स है. All of those will be resolved by this RBI official and that is what an ombudsman is called. ठीक है. अभी क्या हुआ है एक ऐसी मेट्रिक निकाला है कि जो ओम्बुड्समैन स्कीम है ऑफ आरबीआई the number of complaints has risen by 13% in the financial year 25. This is not a very important metric but this scheme is important for the exam. ठीक है. Next है RBI unveils a 5-year national strategy for financial inclusion. So national strategy for financial inclusion है और what is the time period 2025 से 2030 तक. ठीक है. This is basically a 5-year roadmap which will build on the previous strategy focusing on universal, equitable and affordable access to financial services. ठीक है. तो this is important, the NSFI roadmap and the organization which has launched it, that is also important for the examination, RBI. ठीक है. ये 2 सवाल पूछ सकते हैं इसमें से. नेक्स्ट है the Indian rupee fell past ₹90 per US dollar making it one of the Asia's worst performers in 2025. ठीक है. तो आपको पता ही होगा अब $1 is approximately equal to 90 rupees. ठीक है. And this has made Indian currency, Indian rupee, one of Asia's worst performers in 2025. Next है Your Money, Your Right movement. So, Prime Minister Narendra Modi has urged the citizens to participate in the Your Money, Your Right movement, which is basically an initiative aimed at helping people recover unclaimed deposits, insurance proceeds, dividends and other financial assets. ठीक है. तो ये भी बिल्कुल you should know this because the Prime Minister has launched this. ठीक है. तो इसको आप याद रखिएगा. Your Money, Your Right movement is related to what? So this may be asked in the examination. तो इसका आंसर रहेगा unclaimed deposits. ठीक है. कुछ भी unclaimed होगा, deposits या insurance proceeds या dividends या other financial assets, anything which is unclaimed, उसके regarding है ये movement. Next है Best Bank in India. Bank of Baroda has been recognized as the best bank in India at the Bank of the Year Awards 2025 for the Asia Pacific by the Banker magazine, a Financial Times publication. ठीक है. ये ऐसे वन टाइम रीड न्यूज़ है, ऐसे आप थोड़ा सा याद रखिएगा इसको.
Then Google Play Flex credit card. Google Pay has launched its first ever Google Pay Axis Bank Flex credit card in partnership with multiple issuers starting with Axis Bank and on the Rupee network. Again, this is not an important news item. Okay. Then we have Amazon Pay's biometric authentication. So Amazon Pay has introduced biometric authentication for UPI transactions in India. ठीक है? So this will allow the customers to approve payments using a fingerprint or facial scan, thus eliminating the need to enter a PIN. ठीक है? तो this is also not very important, but ठीक है. Next है NHAI, National Highway Authority of India's Rajmarg Infra Investment Trust has been approved as an investment trust. IT, ठीक है, INVIT कर दिया है, इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की जैसे उसको अप्रूवल मिल गया है. So recently, the National Highways Authority of India received the SEBI का in principle approval for Rajmarg Infra Investment Trust as an investment trust, a collective investment scheme. This is similar to a mutual fund, enabling direct investment by individual and institutions in infrastructure projects. ठीक है, तो I'll just explain to you कि क्या होता है इसमें. बेसिकली सपोज म्यूचुअल फंड्स का आपको पूरा पता होगा कैसे सिस्टम ऑपरेट करता है. उसमें क्या रहता है, जो म्यूचुअल फंड ऐसे एक मिडिल मैन की तरह आप देख लीजिए इसको, म्यूचुअल फंड को. तो इसमें विल बी, अगर कोई भी कस्टमर है, दे विल बी बाइंग अ म्यूचुअल फंड. ठीक है, तो म्यूचुअल फंड क्या है, मिडिल मैन टाइप है. वो ऐसे 10-15 कंपनीज में जो बढ़िया चल रही हैं उसमें इन्वेस्ट करेंगे. ठीक है, हमारा मनी को ही उसमें इन्वेस्ट कर लेंगे वो लोग, एंड जो रिटर्न्स मिलेंगे उसमें से दे विल कीप अ कमीशन फॉर देमसेल्व्स एंड द रेस्ट ऑफ द मनी इज गिवन टू अस. ठीक है, इस पे हम लोग क्यों चाहते हैं, सीधा ही क्यों नहीं कर लेते, बिकॉज दे हैव अ लॉट ऑफ एक्सपर्ट्स हु बेसिकली फाइंड आउट कि कौन सी कंपनीज आर द वंस विच आर ग्रोइंग द बेस्ट और फास्टेस्ट, और उनमें वो अपना एक्सपर्टाइज यूज़ करके दे इन्वेस्ट इन दैट. ठीक है, सो दैट इज़ वाई वी पे अ कमीशन और अ प्रीमियम फॉर म्यूचुअल फंड्स. ठीक है, तो सिमिलर केस अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए अप्लाई करते हैं तो दैट इज़ नोन एज एन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट. ठीक है, INVIT बोलते हैं उसको. इसमें क्या रहेगा, जैसे कोई भी नेशनल हाईवे बना हुआ है तो इसको जो बनाने के लिए जो फंड्स हैं दे विल कम फ्रॉम एक ऑर्गेनाइजेशन, जो INVIT बोलेंगे उसको. ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ट्रस्ट है बेसिकली. इसमें एक नॉर्मल इंडिविजुअल जैसे आप और मैं विल बी इन्वेस्टिंग मनी इन दिस मनी विल बी यूज फॉर फॉर्मिंग दिस हाईवे. ठीक है, उसके बाद में ये जो हाईवे पे का जो अर्निंग्स हैं वाया टोल बूथ्स, जो टोल बूथ वगैरह पे जो अर्निंग होगा, दैट मनी वील बी रिसीविंग एज कमीशन. हम लोगों को भी इंटरेस्ट और उसके फॉर्म में, दैट इज़ व्हाट वील बी रिसीविंग. वील बी मतलब जो भी जिसने भी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में करा है, इन्वेस्ट किया है. ठीक है, तो बस इतना ही रहता है. एंड NHAI ने हैज़ अप्रूव वन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और उसका नाम है राजमार्ग. ठीक है, सिंस दैट इज़ फॉर नेशनल हाईवेज, तो नेशनल हाईवेज को हिंदी में राजमार्ग बोल सकते हैं. तो ठीक है, दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आइटम. नेक्स्ट है PM क्रिटिसाइजेस हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ लेबल. ठीक है, सो द Prime Minister has criticized the term Hindu rate of growth as a colonial, communalizing label linking India's past economic stagnation to Hindu culture. The term refers to India's persistently low GDP growth from 1950s to 1980s before the 1991 reforms. ठीक है, तो इसमें बस ये सवाल पूछ सकते हैं कि हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ किस चीज़ को सिग्निफाई करता है. सो बेसिकली एक टर्म था विच वाज यूज्ड बाय इकोनॉमिस्ट्स इन 1950s
1950s to 1980s to signify India's low rate of growth. ठीक है, तब हमारा 3 to 4% rate of growth था इकोनॉमी का. And the main reason for that was excessive protectionism and red tape. ठीक है. However, after the 1991 reforms under the PV Narasimha Rao government, when the finance minister was Manmohan Singh ji, after those reforms, our country we got a very good GDP growth rate. ठीक है, तो बस वही उसकी बात हो रही है. उसके बाद में Cuts International launches TRANGA for WTO. So Cuts International has launched its new global initiative, Trade Not Just Aid, Winners and Losers in the WTO. So to create a positive spirit to reposition the World Trade Organization as a cornerstone of fair and rule-based multilateral trading system. The project was introduced at a high-level conference from 2nd to 4th December in Tokyo, titled "Shaping the Future of Global Trade in an Emerging Shift in an Era of Shifting US Engagement, Emerging Powers and Digital Innovation." तो थोड़ा सा ही इम्पोर्टेंट है ये. You just need to know the name of the organization who has launched this, that is Cuts International. और क्या है ये basically? Trade Not Just Aid, Winners and Losers in the World Trade Organization. ठीक है, तो इसमें basically it is aimed at creating a positive spirit to. ठीक है, तो basically जो WTO है उसका इमेज रिवैम्प कर रहे हैं. उसी का इस चीज़ का एम यही है, इमेज रिवैम्प करना, टू शो इट एज अ मोर फेयर एंड रूल बेस्ड मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम. बस इतना ही है इसमें. ठीक है. व्हेन वाज दिस लॉन्च्ड? इट वाज लॉन्च्ड इन द टोक्यो कॉन्फ्रेंस ऑफ 2025, जिसका थीम था शेपिंग द फ्यूचर ऑफ ग्लोबल ट्रेड इन एन एरा ऑफ शिफ्टिंग यूएस एंगेजमेंट, इमर्जिंग पावर्स एंड डिजिटल इनोवेशन. ठीक है. नेक्स्ट है Deloitte India launches an AI platform, Tax Pragya. So this is not very important because this is a private sector का कोई भी न्यूज़ है. तो बस एक बार just go through it once so that मतलब by chance कहीं पूछ लिया तो you know. Deloitte India launched an artificial intelligence powered platform, Tax Pragya, which helps tax professionals with faster research inputs and insights. ठीक है. So that is all for this month. Thank you. Please like, share and subscribe to my YouTube channel if you have liked this video. You can also follow my Telegram channel for any updates. I'll be uploading these notes on my Telegram channel. So if you want access to these, kindly follow my Telegram channel. Thank you.